गुड इवनिंग एवरीवन। मैं समन पात्रा और हमारी ये जो डिस्कशन है कुछ अनकही बातें द अनटोल्ड स्टोरीज एक सीरीज है जहाँ पे हम मल्टीपल फील्ड से गेस्ट को इनवाइट करते हैं एंड वी टॉक अबाउट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। नमस्ते, गुड इवनिंग। Namaste. Good evening. हाउ Good evening. आर यू डॉक्टर? I am very good. How's your health? I am recovering slowly, but yeah, I'm recovering in a positive way, I can say. Thank you. And welcome. So, Dr. Rupali, please, give a brief introduction about yourself. I am Dr. Rupali and I am a neuropsychiatrist working in Mm-hmm. English Hospital, which is a medical college in Dehradun. Plus, also I Mm-hmm. am a visiting consultant in Arihant Hospital, and I also give a visiting consultant in Haldwani. Okay, great, great. Dr. Rupali, I just wanted to ask you, how long have you been practicing in this field? I think it's been more than 6 years. I've been Mm-hmm. practicing as a psychiatrist, Okay. and I am currently as working as an assistant professor in this Mm-hmm. medical college, and I hope to Okay. give my services of psychiatry related to psychiatry to I Mm-hmm. think much of the people from apart from Uttarakhand and from other states also. Okay, great, great. So I think, in every human's life, what I believe, there Hmm. is a lot of ups and downs in their personal and professional life as well, right? Yes. So I wanted to ask you, let's start with this question that I'm sure that you might have also, gone through some ups and downs in your personal, professional life. Okay. So Yes. have you, right. So have you experienced any kind of, stress or anxiety which remained with you for a long time? And if you would like, if you're comfortable, could you please share it? And how do you deal with it? I am pretty well very aware of the fact that when we completed our MBBS and then we had Mm-hmm. to join something, some super specialization, and we Mm-hmm. had to give our PG, and we were in a lot of stress. I mean, I in particular, I was in a lot of stress. कि, Mm-hmm. क्या PG उठाना चाहिए? What is my favorite subject? What is my aim to become? Because that is Okay. the because creates a rest, a part of your life. कि, you have if you have taken psychiatry or if you have taken surgery or any other super Mm-hmm. specialty, then your entire life goes on with it. Okay. So exam pressure, then related to marriage and everything. Mm-hmm. So that's a part and parcel of life. I think everyone has some kind of the stress, and I think everyone should have some solution to overcome that stress. Right, absolutely correct. I would like to add something to this. When we talk about stress and anxiety, okay, I always say that these two are part of our life. Okay, so Mm-hmm. sometimes we feel stress, and sometimes we feel anxiety, and anxiety is something which when we think about our future, what will happen and all, right? Mm-hmm. And when we talk about problems, especially when we talk about problems, I always talk about हर ताले की चाबी होती है, right? Mm-hmm. अगर चाबी नहीं होगी तो उसका ताला भी नहीं बन पाएगा. So in a way, when you are getting problem, you should know that you already have that solution. It's just that we don't find it or we are not able to find it by Mm-hmm. ourselves sometimes, Definitely. right? have to Yes. we have to see if we are having some kind of problem or if we are in certain Mhm. kind of a stress, we have to think about it. We have to find some or the other solution for that stress. Otherwise, that stress is not never going to be separated from us. Yes. है ना? Yes. में हमेशा कभी ना कभी आप आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेस आता ही आता है. A new Absolutely. responsibility comes a new responsibility comes in, a new triggering factor comes in, है ना? So Hmm. stress is also a part and parcel of life, which I've also mentioned earlier, कि Yeah. it cannot be separated from us. True. Absolutely correct. I completely agree. So, Dr. Rupali, you have been practicing since last 6 years. Okay. Yeah. Before, how did you choose to become a psychiatrist? Why did you choose even at the first place? आपने आपने ये आपने एमबीबीएस किया तो साइकियाट्रिस्ट ही क्यों चूज किया आपने? See, because
none of my family members, each and every one is a cardiologist, one is a surgeon, one Mm-hmm. is a gynecologist. Nobody Mm-hmm. takes psychiatry as the like as a branch. Everybody considers Mm-hmm. that there is some social stigma attached to it. मतलब साइकाइट्री है Yeah. तो एक होता है कि अरे वो तो पागलों के डॉक्टर है, मतलब Mm-hmm. ये जो मेंटालिटी, दिस इज अ Yeah. वेरी कॉमन मेंटालिटी, कॉमन myth which goes inside the mind of the people, and I think that should be busted out. Right? This is Yeah. a common myth should be busted out, that it is not कि अगर कोई पागल है तो इसका मतलब कि उसको वो साइको है, वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, तो he or she is having some kind of trauma or some kind of mental health problem which Yeah. the person is facing himself or herself, Mm-hmm. and the person is not being able to do his regular, the regular activities of daily living. Yeah. So I decided to take psychiatry because I wanted to help people having mental problems, those who are having mental health Okay. problems, who are not psychologically fit, और they feel कि हम स्ट्रेस में हैं, हम प्रेशर में हैं, Mm-hmm. हमसे नहीं हो पाएगा, या Yeah. कुछ बेकार है. So I think Mm-hmm. I am here to give certain solutions to people, like Okay. patients का जैसे कि why should we take medication, मतलब काउंसलिंग से भी तो चीजें ठीक हो सकती है, डेफिनेटली काउंसलिंग से Uh-huh. ठीक हो सकती है, बट दैट डज नॉट रन फॉर द इंटायर पार्ट ऑफ योर लाइफ. True. आप एक इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में काउंसलिंग कैन डेफिनेटली वर्क, बट आई थिंक अगर उसके Yeah. साथ मेडिकेशन भी साथ साथ दिया जाए तो दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पर्सन. Yeah. Absolutely. I completely agree. Normally हम लोग जो बात करते हैं ना, there is a difference between counseling psychologist, clinical psychologist and psychiatrist. ठीक है. But sadly in India, specifically if I say, most of the people, public in India, they don't understand the differentiation between that. मतलब फॉर यस. एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप काउंसलिंग से भी ठीक हो सकते हो, चांसेस आर देयर. आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन गो टू ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड टेक थेरेपिस्ट, ठीक है. लेकिन जैसे हम क्रोनिक डिजीज की बात करते हैं, वहां पे तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा. इट इज अ डेफिनेटली. मस्ट. यस. Definitely. And बहुत बार मतलब I have seen in my OPD or in IPD cases when certain situations are not being handled by other people. For example, a person is suffering from a chronic stomach illness, है ना? अगर या. gastrointestinal for say 3 years, 4 years, or even if you say headache है, chronic headache है, so the person first tries to go to a physician. फिजिशियन से हैंडल ओके. नहीं होता तो फिर वो न्यूरो न्यूरो सर्जन के पास चला जाता है, न्यूरो सर्जन से हैंडल नहीं होता वो न्यूरो फिजिशियन के पास चला जाएगा. तो साइकेट्रिस्ट पास वो सबसे लेट में आएगा व्हेन या. एवरीबॉडी विल से हम मतलब थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर पेस, यू प्लीज मीट अ साइकेट्रिस्ट. साइकेट्रिस्ट इज द या. लास्ट ऑप्शन व्हिच आई कंसीडर कि इस चीज में दिस स्टिग्मा इज स्टिल देयर, एब्सोल्युटली. ये है. आई है ना? कंप्लीटली अग्री. So ये चीजें I have observed it and I want to tell the people around here या जो भी are here are listening to me. So I want to say कि everything is not only just physiological. Physiological या. things can be even psychological too, because everything is attached with brain, from the brain, या. है ना? So if things are not going well in your entire system beyond your neurological part, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेन से रिलेटेड नहीं है. ब्रेन है तभी सारा पूरा बॉडी का फंक्शन है. राइट. अगर ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपसे डेफिनेटली किसी ना किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में कुछ ना कुछ असर आएगा ही, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा ही आएगा. True. Absolutely correct. इसमें I would like to add few points. Number one, when we you started stigma. आप जब cases देखते हो, there's a and actually मतलब not only in India but most of the part of world. Okay, stigma is there. When we talk about mental का when we talk about mental, the first word comes mad. And या. ये अभी का जनरेशन नहीं, it's been genetic issue. हम पागल हैं कि हम क्यों जाएंगे
पागलों के डॉक्टर के पास, एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली। सो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को पागलों के डॉक्टर बोला जाता है, विच इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, यस, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द वी डोंट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, या। तो इसी वजह से ये जो मैं पैन इंडिया कैंपेन कर रहा था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके, दिस वाज द ओनली रीजन फॉर दिस। बट एनीवेज आई कुड नॉट कंप्लीट इट बिकॉज माय हेल्थ इश्यूज, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट अगेन टू रीस्टार्ट इट व्हेन आई एम completely physically fit. My best wishes But are with you. Definitely accomplish this. thank you, Uh, thank you. तो दिस इज वन ऑफ द वे, देयर आर मल्टीपल वे। अभी हम जो बात कर रहे हैं लाइव सेशंस, मैं पहले भी ये चीज कर चुका हूँ बहुत साल पहले से, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज, ठीक है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर रूपाली की, व्हाट आर योर थॉट प्रोसेस एंड व्हाट आर द वेज टू इराडिकेट स्टिग्मा इन द कंट्री और इन द सोसाइटी? स्टिग्मा हटाने के लिए क्या क्या करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस? Apart from awareness, I think there are a lot of social medias, there are a lot of things. Awareness is one is a big thing is awareness only. आप awareness किसी भी तरीके से दीजिए, सोशल मीडिया के थ्रू दीजिए, कैंप्स लगाइए, है ना, एजुकेशनल वीडियोस दीजिए, या फिर आप किसी तरीके से बैनर्स के या कुछ इंस्टीट्यूशंस में जैसे आजकल होता है, स्कूल्स में बच्चों को बताया जाता है, स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज में, मतलब अवेयरनेस इज वन सच थिंग तो है ही है। आई थिंक या कैन बी लाइक लाइक स्प्रेडिंग ऑफ वीडियोस हो गया। Thank you so much again, Dr. Rupali, and thank you for coming. And thank you to all the viewers who are watching us and जो आगे देखने वाले हैं. Thank you so much, guys. Thank you so much. Good night.